afternoon. Once again, welcome to the final discussion about 12th NCRT. We did 11th NCRT quick revision yesterday in the previous session where we discussed all important types. So similarly, I've done some analysis based on questions which are asked from NEET 2013 to 24. All the types I have tried to cover. First, let us go chapter wise. And the 12th NCRT has bit more weightage as compared to 11th NCRT. Okay, so let us start with this 12th NCRT final revision about physics for your NEET 25. Yeah, you all can see my index. It is NCRT 12th. Topics and subtopics are given. Let us first analyze this, which is very, very important. समझ लो कि Sunday, 4th May 2025, most of the questions will be of this type because these are the types which are being covered in 13 to 24. Electrostatics. In electrostatics, the most important type is Gauss theorem and capacitor, matlab Gauss law and capacitors. They always ask questions. They have asked questions on Gauss theorem. So the application should be clear. Okay. You need to directly remember those application based formulae. And capacitors. Electrostatics में capacitor पे question आता है. Maybe not the grouping of capacitor like series parallel. That is more important for current electricity. We'll be solving those questions. Electric fill lines. They have asked many times questions on electric fill lines. What are the properties of electric fill lines? All right. Flux is important either in electrostatics or magnetism में और EMI में. मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके ऊपर एक क्वेश्चन तो होता ही है. दिस इज जनरल ऑब्जर्वेशन ऑन फ्लक्स. सो फ्लक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, राइट. उसमें आपको एंगल वाले पार्ट में यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड. मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा तो इट इज ई ए कॉस थीटा. मैग्नेटिज्म होगा तो बी ए कॉस थीटा, वेयर ए इज द एरिया. तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द फील्ड. तो जनरली दे गिव यू एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द प्लेन, तो उसको फिर 90 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है. ओके, नेक्स्ट. या ऑफ कोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो मैंने यहाँ पे 6 टाइप्स लिखा है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर्स एंड गॉस लॉ, उसमें से 4 टाइप के क्वेश्चंस बच्चा लोग सुन लो. आउट ऑफ 6, 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 6 में से. नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेनली ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब सीरीज, पैरेलल, सिंपल आइडेंटिफाई करना है. तो दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके. ईएमएफ. ईएमएफ व्हेन आई से इट इज ऑल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मीटर ब्रिज, मेरा अकॉर्डिंग टू मी 2 टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज ईएमएफ एंड मीटर ब्रिज. बिकॉज सी व्हेन आई से मीटर ब्रिज, उसमें व्हिटस्टोन्स नेटवर्क भी कवर हो ही जाता है, करेक्ट ना. बिकॉज व्हिटस्टोन्स ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज मीटर ब्रिज, दैट्स इंपॉर्टेंट. केवीएल लिखा है मैंने, बट नॉट वेरी मल्टीपल लूप्स रहेंगे, बहुत सारे इक्वेशंस बनेंगे, नॉट दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मे बी 1 और 2 लूप्स है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. नेक्स्ट कम्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब एज पर एनसीईआरटी बुक इट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म. तो उसमें वी हैव सोलेनॉइड, एमसीजी, एम्पियर्स लॉ, बियॉट-सावर्ट्स लॉ. अभी याद रखो एमसीजी के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, मतलब कन्वर्टिंग एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इनटू एन एमीटर और इनटू अ वोल्टमीटर, कन्वर्जन टाइम. एंड यू हैव क्वेश्चंस ऑन, आई मीन यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन सोलेनॉइड. सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ आपके आई कैन से एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में भी यही आता है. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. सोलेनॉइड, magnetic field inside the solenoid, that is mu 0 n I, mu naught small n into I, where small n is number of turns per unit length. Question लेते हैं, idea आएगा. Then we have magnetism, मतलब as per NCERT book this is magnetism and matter. उसमें this is the chapter which मैंने कल भी बोला कि this should be read from NCERT book, because magnetism is the chapter जिसमें you can expect questions from graph, questions on definition, questions on
प्रॉपर्टीज, यूनिट्स, बहुत सारी क्वांटिटी है, सो assertion रीजन क्वेश्चंस भी बन सकते हैं मैग्नेटिज्म में से। तो ये चैप्टर इज मस्ट व्हिच यू नीड टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ईएमआई प्लस एसी मतलब दो अलग चैप्टर है, बट एक ही यूनिट मैंने काउंट किया है, तो जो मैंने टाइप्स लिखे उस पर क्वेश्चन आना ही आना। व्हेन आई से Faraday's and Lenz's law, mainly questions on induced current का type, direction type, मतलब based on law of conservation of energy, current का direction how to decide, that is given by Lenz's law. तो that मैंने कुछ highlight किया, motional EMF मतलब BLV sin theta, any conductor moving in a magnetic field having some length, speed, velocity, I mean, and how much EMF is induced. तो motional EMF। फिर मैंने एलसीआर सर्किट लिखा है, एलसीआर सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर पे क्वेश्चन फ्रॉम एसी सर्किट्स, विदाउट दैट मैं पेपर सेटिंग ही नहीं सोच सकता, बिकॉज आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड एसी सर्किट्स इज द चैप्टर जिसमें यही दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्टिकुलरली एलसीआर सर्किट में यू कैन थिंक ऑफ व्हाट, रेजोनेंस कंडीशन, तो उसकी कंडीशंस एक बार अच्छे से याद कर लेना। एंड ट्रांसफॉर्मर में है ही क्या यार, वो एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी टू सेकेंडरी इज ईएमएफ ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड करंट ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो मेनली उसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सिंस लास्ट फ्यू इयर्स यू मस्ट हैव सीन डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्वेश्चन आता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। नाउ सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी हैव QEV sin थीटा, BIL sin थीटा, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये सब में क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन आती है ना। मतलब इफ यू राइट F bar is equals to Q into V cross B, whereas current carrying conductor पे force experience is can be given as IL bar cross B bar, ये हो गया MEEC में। And from electromagnetic waves we have the direction of propagation is given by E bar cross B bar, मतलब direction of propagation मतलब basically velocity of electromagnetic waves. So बच्चा लोग please try to understand over here क्रॉस प्रोडक्ट की जो एप्लीकेशन है, मतलब वेक्टर्स चैप्टर है ही नहीं एज पर एनसीईआरटी बुक, तो क्रॉस प्रोडक्ट का रियल एप्लीकेशन कम्स इन दिस चैप्टर, पर्टिकुलरली एमईसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पे उसका डायरेक्शन के फंड कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट रे ऑप्टिक्स, मतलब इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वेर आई नो इफ यू, आई मीन दिस इज अ चैप्टर वेर खाली फॉर्मूला याद रख के आपका काम नहीं होगा, यू हैव टू अप्लाई द साइन कन्वेंशंस, बरोबर, मींस वेयर इज द लाइट गोइंग फ्रॉम, इन व्हाट डायरेक्शन, सो इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट जा रहा है, आई मीन आई एम मेजरिंग एनी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, तो आई टेक इट एज पॉजिटिव, any distance which you measure against the direction of light, you take it as negative. So sign conventions are very important here, not only formulae but sign conventions, because without sign conventions आपके answers wrong जाएंगे। तो you have, I've observed that NEET 2013 से 24 तक almost mostly every time they've asked either question on lens makers equation or combination of lens, तो lens बहुत ज्यादा important है, बहुत ज्यादा important है। Alright, NEET 24 इफ यू सी प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन यू कैन दिस टाइम यू कैन एक्सपेक्ट ऑन थिन प्रिज्म particularly. So prism and lens is very very important. Now there is a lots of confusion regarding microscope and telescope कि वो NTA ने रखा है कि नहीं रखा है. Please try to understand ray optics में जो part है, it is about magnifying power of telescope and microscope. तो magnifying power के फॉर्मूले याद कर लेना। वेव ऑप्टिक्स में भी यही दो इंस्ट्रूमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर वाला पार्ट नहीं है बट मैग्नीफाइंग पावर वाला पार्ट है, सो आई हैव रिटन इट हियर। देन नेक्स्ट कम्स इज वेव ऑप्टिक्स, देयर आर टू चैप्टर्स ऑन ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में कुछ ज्यादा है नहीं यार, दो ही टाइप से मिला के, वन इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड द सेकंड वन इज पोलराइजेशन, मतलब डाइफ्रैक्शन है बट दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। So I will say Young's double slit experiment ज़्यादा important है, where you can expect question on I max upon I mean, intensity related part in short. And the polarization part में particularly मैंने लिखा है Brewster's law, right?
सो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम्स वो फ्रिंज विड्थ का रिलेशन कितना होगा, कम ज्यादा, यू नो, ऑल दोस टाइप क्वेश्चंस। या वेव ऑप्टिक्स में से भी मैं थियोरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट कम्स इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स भी आ गया। दिस इज अगेन यू कैन सी, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी पुट 3 स्टार। अब थोड़ा एनालिसिस देखो, few papers, if you see PYQs, they have asked maximum question from modern physics branch, physics section of physics, that is from NCERT 12th. तो मॉडर्न फिजिक्स में आता है ड्यूअल नेचर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ड्यूअल नेचर में पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड रेडियो एक्टिविटी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब लाइमन बाल्मर सीरीज वाले क्वेश्चंस। रेडियो एक्टिव में पर्टिकुलरली लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अल्फा बीटा एमिट हुआ तो कितना मास नंबर, एटॉमिक नंबर चेंज होता है। देन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एंड सेमीकंडक्टर्स में मैंने 2 टाइप लिखा है फ्रॉम अमंग्स दिस ऑल पेपर्स जो मैंने ऑब्जर्व किया। द क्वेश्चंस ऑन लॉजिक गेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिक गेट्स आपको बहुत अच्छे से करना है, एंड पर्टिकुलरली डायोड। डायोड में मैंने थियोरी लिखा है, मतलब सपोज अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है, तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में उसका थियोरी, मतलब ग्राफ में क्या डिप्लेशन रीजन का विड्थ कम होता है, ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, व्हाट इज डिफ्यूजन करंट, व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट, कहां से कहां फ्लो होता है, दोस टाइप्स ऑफ थियोरी क्वेश्चंस। You can even expect assertion reason or true or false kind of statements. So logic gates in diode important है, बट चलो ट्रस्ट मी, अगर ये टाइप्स में से आपका वंस अगेन अगर 80% है, तो आपका ऑलमोस्ट आई कैन से 20 क्वेश्चन के आसपास बन जाएंगे। 20 से 25 के बीच में नंबर हो सकता है, तो दैट मे गिव यू अराउंड 80 to 100 के बीच में नंबर। और जो हम लोगों ने कल एनसीईआरटी डिस्कस किया था 11th का पार्ट, उसमें से कर लो, तो दिस कैन इजीली, यू कैन गो, यू नो, यू कैन रीच अप टू 130 प्लस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। ऑलराइट, जो जो मैंने टाइप्स बोला, थोड़े क्वेश्चंस कवर करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, यहाँ पे चार्जेस रखे, तो देर आर चार्जेस लाइक Q, 2Q, 3Q एंड 4K। सारे कुछ नहीं बोला तो ऑब्वियसली ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस। दे आर प्लेस्ड अलोंग अ स्क्वायर, I mean they are placed at the vertices of a square ABCD. Question here is, ये मेरा स्क्वायर का सेंटर है, the intersection of the two diagonals, this is O. Question here is the direction of electric field. इसमें डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of square is along, मतलब आपके ऑप्शन है नंबर 1 AB, नंबर 2 BC, आई एम सॉरी CB, नंबर 3 BD एंड नंबर 4 AC। मतलब किसकी डायरेक्शन में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड वेयर, अवे। मेरे केस में सारे पॉजिटिव चार्जेस ही है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट इफ इट इज नेगेटिव चार्ज, राइट, then in that case intensity is directed where, towards. So just question के डायग्राम को चेंज नहीं करते, बट यहाँ पे आई होप यू अंडरस्टैंड, ये मेरा स्क्वायर था ABCD एंड दिस आर द चार्जेस। चार्जेस क्या है, इट्स Q हियर एंड 3Q। पहले यू जस्ट थिंक अबाउट दिस, आप पहले खाली इसी के बारे में सोचो। इफ आई जॉइन दिस,
और ये मेरा सेंटर है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. ड्यू टू 3Q चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा विल बी अवे. सेंटर पे दिखा रहा हूं तो अवे मतलब इट शुड गो लाइक दिस ना, इन दिस डायरेक्शन, राइट. एंड ड्यू टू ये जो चार्ज है डायगनली ऑपोजिट Q, उसकी वजह से इंटेंसिटी इधर जाएगा. दिस इज ड्यू टू EQ एंड दिस इज E ड्यू टू 3Q, ऐसा. बट डोंट यू एग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड सी सारे चार्जेस से सेंटर का डिस्टेंस तो सेम ही है. बट इन दैट केस जो चार्ज ज्यादा मैग्नीट्यूड वाइज रहेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर. मतलब इफ यू जस्ट कंसिडर E3Q मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3Q एंड EQ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, तो वो दोनों में से कौन डोमिनेट करेगा? तो दिस इज द वन इफेक्टिव. ये मेरा सेंटर है बाय द वे. ओ, समझ में आ रहा है? एंड इफ आई टेक दूसरा डायगोनल व्हिच इज BD, तो उसमें एक चार्ज 2Q रखा है एट द वर्टेक्स 2Q B एंड चार्ज 4Q रखा है एट द वर्टेक्स D. तो उसमें भी 4Q बड़ा है तो उसकी वजह से इंटेंसिटी शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर. तो उसकी वजह से इंटेंसिटी, सॉरी, उसकी वजह से इंटेंसिटी विल गो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. चार चार्ज की वजह से मैंने दो ही चार्ज की वजह से रिप्रेजेंट किया है, राइट. जो डायगोनली आई मीन ऑपोजिट डायरेक्शन में थे उसको कैंसिल आउट करके. सो फाइनली इफ आई कैन अप्लाई पैरेललोग्राम, है ना, ये दो वेक्टर्स है, my resultant intensity will go in this direction. So it is parallel to what? CB. Correct? It's parallel to CB. मतलब एक सिंपल क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन ओनली. आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a hollow cylinder has charge Q within it. If phi is the electric flux associated with curved surface of cylinder, then flux associated with the plane surface, rather I should write each plane surface will be. ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है बट गॉस थ्योरम के लिए अच्छा है because most of the reference book में you find this. So see, question says there is a hollow cylinder. I hope you understand. जब मैं सिलेंडर बोल रहा हूं तो इसके तीन सरफेस रहेंगे. वन इज दिस प्लेन सरफेस, ये भी प्लेन सरफेस है, राइट. दिस इज प्लेन सरफेस एरिया 1. PSA मतलब प्लेन सरफेस. दिस इज प्लेन सरफेस एरिया 2 एंड दिस इज CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया. तो सिलेंडर के तीन सरफेस है, दो प्लेन सरफेस एक कर्व्ड सरफेस. क्वेश्चन इज उसके अंदर एक चार्ज है Q. तो आई होप यू अंडरस्टैंड बाय गॉस थ्योरम, करेक्ट, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन. तो पूरा सिलेंडर में से, मैंने यहाँ पे सफिक्स में सिलेंडर लिखा बच्चा लोग, पूरा सिलेंडर में से कितना फ्लक्स मिलेगा? तो पूरा सिलेंडर क्या इनक्लोज कर रहा है? एक चार्ज Q को इनक्लोज कर रहा है. तो इट इज Q बाय एप्सिलॉन. बट नाउ आई नो दैट फ्लक्स इज विच क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. मतलब ये जो सिलेंडर में से मिल रहा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्लेन सरफेस एरिया 1 प्लस फ्लक्स फ्रॉम द प्लेन सरफेस एरिया 2 प्लस फ्लक्स फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस एरिया. इंडिविजुअली हर एक सरफेस का फ्लक्स ऐड करेंगे तो पूरे सिलेंडर का फ्लक्स मिलेगा ना, व्हिच इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट. अभी जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में व्हाट दे हैव गिवन हियर इज दैट phi is the flux associated with the
कर्व्ड सरफेस. So plane surface area 1 and 2 का जो flux रहेगा, is it okay if I write it as 2 times plane surface area? मतलब दोनों प्लेन सरफेस एरिया में से एरिया दोनों का सेम ही होगा ना, तो फ्लक्स भी सेम ही आएगा, तो उसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया. और मुझे ये जो मैंने सी एस से लिखा है ना यहाँ पे, दैट इज व्हाट इस क्वेश्चन में मुझे फाई दिया है, which is q by epsilon. समझ में आ रहा है बच्चा लोग? So from here I can say flux from any of the plane surface area will be half of q by epsilon naught minus phi. क्लियर? ये मेरा आंसर होगा. तो एक गॉस थ्योरम के ऊपर का एक सिंपल क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनरली ये वर्क डन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. इफ 100 जूल ऑफ वर्क has to be done in moving an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt to another place having potential V volts, then find V. So I'm displacing one charge, say maybe from point A to B. Which charge? 4 coulomb charge we are shifting, we are displacing from a point where potential is minus 10 volt, minus 10 I mean, to the point where potential is V volt, minus 10 to V. And for this, the corresponding work done is given to you as 100 joule. Try to get this V. Again, I'm telling you, yesterday also I told you, if you try to visualize diagrammatically question ko, so it becomes very simple to frame it. समझना easy हो जाता है. And calculation error, you know, कुछ रॉन्ग डेटा लेना, यूनिट कन्वर्जन, ये सब जो अगर आप नहीं करते हो तो वो भी क्लियर हो जाता है विद डायग्राम. तो स्टिक टू बेसिक्स. वर्क डन is given by what? Charge into potential difference. What charge you are moving? 4 coulomb ka charge. And what is potential difference? It is final minus initial. Finally, where are you reaching? At point जहां पे potential V है. Minus initially कितना था? Don't forget there is a minus, तो ये minus minus plus होगा. This work done is 100 joule. तो 100 by 4 ये 25 हो गया. V plus 10. तो यहां से you get V as what? 15 volt. सिंपल है, बट ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस ग्रेविटेशन में भी यू कैन एक्सपेक्ट. आपको इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल दिया है, एंड इंस्टेड ऑफ चार्ज यू आर शिफ्टिंग मास. कॉन्सेप्ट रिमेन सेम. वहां पे वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a slab of material of dielectric constant K has same area as the plates of parallel plate capacitor. But has thickness
3/4 of D, where D is the plate separation. How is capacitance changed when slab is inserted between plates? Into bracket they have given C naught is the initial capacitance. But you have to get your answer in terms of initial. So question ऐसा है, initially you can take it as air capacitor. दो प्लेट्स के बीच में कुछ मीडियम नहीं है, एयर है. ये दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है, तभी का कैपेसिटी सी नॉट है. तो सी नॉट इज व्हाट? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. नाउ द क्वेश्चन सेज यही दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, हैविंग थिकनेस टी, ये डी है. तो फॉर दिस द कैपेसिटी फॉर्मूला इज व्हाट? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के. करेक्ट, ये फॉर्मूला है. सो एज पर द क्वेश्चन, वो जो थिकनेस है they've given it is 3d by 4 plus t by k. Once again 3d by 4 and k का value k. Since in terms of k. All right. Now the question here is, ये मुझे starting में बोला ना constant is k. I have to get this in terms of c naught. So if I simplify it, it is epsilon naught a. ये d minus 3d by 4 मतलब वो d by 4 होगा. तो can I take d by 4 out? तो I'll get 1 plus 3 by k. अब ये जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है उसको सी नॉट बोला है ना, ये 4 ऊपर जाएगा, अपॉन यू गेट व्हाट? 1 प्लस 3 के. राइट. सो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो यू गेट इट एज 4k सी नॉट अपॉन k प्लस 3. राइट. ये फॉर्मूला कवर करने के लिए आई टुक दिस क्वेश्चन. ओके, ध्यान से छूटना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, नंबर 5. क्वेश्चन इज, एक मिनट है, in the electric field due to charge q, a charge small q moves from A to B as shown. So this is that arc they are talking about. यहाँ पे एक charge है, that's plus q, and here is point A, this is point B. From A to B, okay, एक small q लेके जा रहा हूँ. And what they've given here is, ये जो AOB angle है वो 30 डिग्री. Okay. So question here is, to move this charge from A to B, how much work is required to be done? So I said you stick to basics now. Work done is what? Charge into potential difference. Which charge you are moving? It's Q. Capital Q move नहीं कर रहा है. Capital Q stationary है. This is stationary charge. उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल चार्ज क्यू आई एम मूविंग.
So where to where you are going, A to B. So final is B, initial is A. But don't you agree, guys? This VB and VA must be same, which is 1 upon 4 pi epsilon naught matlab K into capital Q by R. ये मेरी radius है. This A and B are along an arc, which is whose radius is R. So point A and point B, point O से same distance पे है ना. तो potential at A and potential B will be same, because potential का formula क्या होता है? 1 upon 4 pi epsilon naught, जिसको मैंने K लिखा, into Q by R. तो चार्ज Q तो स्टेशनरी है, उसी की वजह से दोनों पे पोटेंशियल सेट हुआ है. तो V एंड VB सेम है, तो डिफरेंस जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो होगा. एंड वर्क डन किधर जीरो होता है? फॉर विच काइंड ऑफ सरफेस? यू कैन से दिस मस्ट बी विच सरफेस. ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, इसके लिए क्वेश्चन कवर किया. इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल मतलब इवन इफ आई टेक सम पॉइंट से मे बी P ओवर हियर एंड Q ओवर हियर, P टू Q भी वर्क जीरो ही होगा, because the सारे points A, B, P, Q are having same potential. So the surface which has potential same, right? Every point on that surface is called equipotential surface, right? Okay. One more and last. On capacity. Last matlab on capacity. Question here is, please don't get confused. ये दो capacitor है, 3 microfarad and 5 microfarad. And ये दो batteries है, 20 volt and 4 volt. Okay, confused nahi hona. Question is, we have to find the potential difference across 3 microfarad. Let's name this point is now AB. So I have to find out VAB. Is your question. समझा? See, as long as single loop है, loop तो एक ही है ना? I repeat, as long as single loop है, all capacitors must be in series. तो यहाँ पे effective capacitance if I want to calculate series में इसके लिए, it is C1 C2 upon C1 plus C2. So it is 15 by 8 microfarad. अब इसको ऐसे ही रहने दो. अभी if you see these two batteries, they are connected such that दोनों का positive end is facing connected together ना. मतलब ये दो batteries कौन से मोड में है? Series opposition. When you connect batteries like this ना, plus minus, that is series addition. So we write E1 plus E2. But when you connect it like this, it's going to be E1 minus E2, जिसमें like poles साथ में. So that's why I said it is a series opposition. So net EMF must be what? Obviously 20 minus 4. 20 volt तो dominate ही करेगा ना. So it's going to be what? 16 volt. Of course, A is at a higher potential. Point A पे बड़ा वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉइंट B पे लोअर है, तो A is at a higher potential. फाइनली मुझे VAB चाहिए. तो you stick to basics. V is equal Q is equal to CV. It must be Q by C. तो पहले मुझे नेट चार्ज निकालना पड़ेगा. सर्किट में कितना है नेट चार्ज? तो नेट चार्ज must be what? Net EMF into effective capacity. Q is equal to CV. ये CS effective capacity कितना मिला? 15 by 8. And net EMF कितना मिला? 16. तो ये हो जाएगा 30 माइक्रो कूलम. एंड एक बार चार्ज मिल गया तो मैं कोई भी ब्रांच के अक्रॉस का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ. मतलब इफ यू वांट जस्ट VAB, यू स्टिक टू बेसिक्स, इट इज Q by C. तो नेट चार्ज कितना मिला? 30 और कैपेसिटी कितना है? 3. तो आंसर मस्ट बी 10 वोल्ट. And with A at a higher potential, VA must be more than VB, right? Okay. Next. Any query if you have or could doubt तो आप ये वापस lecture तो देख ही सकते हो. Question is, find
effective resistance between A and B. ये मेरा गिवन नेटवर्क है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सीरीज एंड पैरेलल आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या है? सिंपली यू नेम द पॉइंट्स. अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए हो गया, ये भी हो गया, बिकॉज वहां तक बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. रेजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल्स अलग आएंगे, तो यू कैन नॉट टेक द सेम पॉइंट. नाउ अगर ये पॉइंट बी है तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया. इतना तो फॉर श्योर है कि ये जंक्शन पे करंट स्प्लिट होगा नहीं, मतलब दिस टू मस्ट बी इन सीरीज. तो ये 20 ओम है. सिमिलरली ये दो भी सीरीज में, तो ये भी 20 ओम है. तो नाउ कैन आई से एक ये 20 ओम मैं टिक कर रहा हूँ, ये 20 ओम इज बिटवीन ए बी. ये 10 ओम भी बिटवीन ए बी है, ए एंड बी आई मीन टू से. एंड ये 20 ओम भी बिटवीन ए एंड बी. सो फाइनली आई कैन से इट्स बिटवीन ए एंड बी. तीन रेजिस्टेंस है. क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये पहला वाला, लेट्स राइट नंबर वन 20 ओम. ये दूसरा वाला 10 ओम. एंड ये तीसरा वाला 20 ओम. ये तीनों पैरेलल में. एम आई राइट? सो 20 एंड 20 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 10. है ना? when two equal resistances are in parallel, equivalent becomes half. तो 10 हो जाएगा. एंड वो 10 ये रिमेनिंग 10 के साथ पैरेलल में आएगा. सो फाइनली 10 पैरेलल 10 विल बी व्हाट? 5 ओम. करेक्ट. तो इसका आंसर 5 ओम है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 ohm, 5 ohm, 10 volt and 4. इधर भी अर्थिंग दी है. क्वेश्चन इज what will be the current I in the circuit. मुझे करंट पूछा है, तो प्लीज मेक अ नोट. ये ओपन नहीं है. व्हाट इज दिस? अर्थिंग ना, ये वाला सिंबल अर्थिंग का है. तो यू कैन सिंपली रीड्रॉ दिस एज व्हाट? समझा? बिकॉज इधर का पोटेंशियल तो 0 वोल्ट है ना, तो मैं सीधे इसको ज्वाइन कर सकता हूँ. तो ये इधर किधर ये केवीएल आएगा? दिस इज वेरी सिंपल ना. आई जस्ट हैव टू अप्लाई व्हाट? एक सिंगल लूप है तो टोटल करंट विल बी व्हाट? नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो नेट ईएमएफ इज 10 and resistance is 6 plus 5 plus 4, which is 15. समझा? So it is 2 by 3. 2 by 3 मतलब 0.6666 मतलब 0.67 ampere I can take. Okay. Next. चैप्टर वाइज ट्राई करते सब कवर करने का, और टाइम मिला तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वी कैन ट्राई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
if two identical short dipoles of magnetic moment M are arranged as shown, then net magnetic moment of the system will be. मैं ये एक बात कर रहा था, from this chapter you can expect some theory questions as well. तो मैग्नेटिज्म चैप्टर आपको रीड करना है. यहाँ पे थियोरी नहीं है. दिस इज वेरी सिंपल, राइट? यू आर गिवन द टू दिस थिंग डाइपोल्स अरेंज लाइक दिस. ये एक और ये दूसरा. यू ऑल कैन सी इधर उसका साउथ है, नॉर्थ है, तो देयर इज अ मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट. और ये दूसरे का साउथ और ये नॉर्थ है, बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ ये अट्रैक्ट करेंगे ना, तो सिस्टम स्टेबल रहेगा. इसका मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शंस भी बताया. एंड आई एम ऑफ कोर्स यू कैन सी इधर आपके रिजल्टेंट सिस्टम बन रहा है ना, ये 90 है. तो जो रिजल्टेंट बना, आई होप यू अंडरस्टैंड, उसके लिए ये साउथ और ये नॉर्थ है ना, ऐसा. वेर इज मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो ये मेरा नेट मैग्नेटिक मोमेंट सिस्टम का होगा. ऑफ कोर्स अगर आपको पैरेललोग्राम अप्लाई करना है तो देयर दिस थिंग, एक का एंड पॉइंट और एक दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी कोइंसाइडिंग ना, राइट? सॉरी, पैरेललोग्राम अप्लाई करना, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट या फिर दोनों का एंड पॉइंट शुड बी कोइंसाइडिंग ना. तो मेरे पास ये वाला एक जो मैग्नेट है, ओके, उसकी टेल पे दूसरे का टेल अरेंज करके ऐसे अरेंज कर शिफ्ट किया, वेक्टर्स कैन बी स्लाइडेड एंड दिस बिकम्स द रिजल्टेंट, मेरा नेट मैग्नेटिक मोमेंट, राइट? तो ये एम है, ये भी एम है, तो माय नेट मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स व्हाट? रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर विच इज रूट 2. रिजल्टेंट निकाला. क्लियर? Okay, next. Question number 10. Question is, a solenoid, एक क्वेश्चन आना ही है तो एक बार कवर कर लेते. A solenoid of 1.5 meter length and 2 centimeter radius has 15 turns and carries a current of 5 ampere. Then magnetic induction inside the solenoid will be. तो इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है. मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सोलेनोइड इज म्यू नॉट एन आई. बट बाय द वे जो स्मॉल एन है वो क्या होता है? इट्स अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सो दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय n by l. प्लीज रिमेंबर, भले मुझे डायमीटर दिया है, इट हैज नथिंग टू डू. रेडियस दिया है, दिख रहा रेडियस सेंटीमीटर में और लेंथ सेवरल मीटर में, तो इस सोलेनोइड में लेंथ इज वेरी लार्जर कंपेयर टू रेडियस. तो यही फॉर्मूला यूज कर. सो दिस इज 4 pi
into 10 raised to minus 7. This total number of turns is 15 and total length is 1.5 and it is carrying a current of 5. तो ये सीधा 10 हो गया, तो it is 4 into 5 into pi into 10 raised to minus 6. Solve करके you get the answer. Right? Next. Question is, flux with each turn of solenoid is phi. If flux with each turn of solenoid is phi, having length L and area of cross section A with total number of turns capital N, then magnetic moment of solenoid will be एक खाली expression के form में है. Okay, just to cover the type. So please try to understand. मुझे every turn के साथ का flux दिया है. And basic formula क्या है? It's BA into cos theta. But theta जो है, like this is your solenoid, correct? ये आपका solenoid है, which is carrying some current like this. Suppose ये wire है उसके ऊपर और उसमें से current जा रहा है ऐसा. So this is how मेरा magnetic field होगा. So it is going to be parallel to area vector. This will be BA because theta कितना है? 0 है, तो cos 0 1 होगा. अभी this B is what अभी लिखा ना हम लोगों ने, mu naught into n by Li into area. ये मेरा flux है. So from here I can say flux is equals to mu naught by L into, is it NIA? समझा? Because this NIA is nothing but what? Magnetic moment. So magnetic moment must be phi L upon mu naught. Right? Just expression के terms में. Correct? Okay. Next. अब MEC का थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, तो क्वेश्चंस ऑन एमीटर वोल्ट मीटर तो आते ही है ना. एक क्वेश्चन है, प्लीज रिमेंबर बिफोर वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, you have a galvanometer, तो this capital G stands for उसका internal resistance. IG is the maximum current through galvanometer. तो basically उसको range भी बोलते हैं, और it is sometimes also called full scale deflection current. Okay, and उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा अगर करंट फ्लो होगा, तो वी कॉल दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज VG. अभी IG अगर करंट है व्हिच कैन बी फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, इफ समहाउ वो करंट को मैं बढ़ा सकता हूं, करंट कैरिंग कैपेसिटी को रीड करने का. आई कॉल इट एज एन एमीटर. दैट इज पॉसिबल बाय शंटिंग इट. तो गैल्वेनोमीटर को ओके
by connecting it with a very very low resistance, जिसको शंट बोलते हैं, क्या मिलता है? You convert what this into an ammeter, where ये एमिटर के अंदर जो करंट एंटर करेगा दैट इज आई. तो व्हाट इज आई? इट इज द रेंज ऑफ एन एमिटर. आई इज द रेंज ऑफ एन एमिटर, आई जी इज द रेंज ऑफ द गैल्वेनोमीटर. तो एन, मैंने नंबर फाइंड किया आई बाय आई जी, ये एन क्या हो गया? एन इज द फैक्टर बाय विच रेंज नीड्स टू बी इंक्रीज्ड. मतलब समझो मेरा आईजी का वैल्यू 5 मिली एम्पियर है एंड आई का वैल्यू 15 मिली एम्पियर है, तो 15 डिवाइड बाय 5, 3 टाइम्स मुझे रेंज बढ़ानी है. फॉर दैट आई नीड टू कनेक्ट समथिंग अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर व्हिच इज कॉल्ड शंट. सो शंट का फॉर्मूला इज व्हाट? कैपिटल जी अपॉन n माइनस 1. एंड यही गैल्वेनोमीटर में से साथ में if I connect very high resistance, let us say R dash in series, where this R dash is much greater than capital G, तो ये डिवाइस क्या बनता है अपना? वोल्टमीटर. सो सेम थिंग वोल्टमीटर में भी यू फाइंड छोटा n which is V by VG, okay, and the series resistance is what? G into n minus 1. तो ये मेरे फाइनल एक्सप्रेशंस है for shunt, means resistance in parallel, very low resistance to convert into an ammeter, and R dash very high resistance in series to connect that into a voltmeter. ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन हियर इज an ammeter is 12. An ammeter of resistance 20 ohm gives full scale deflection when 1 milliampere passes through it. What is the maximum current that can be measured? What is the maximum current which can be measured by connecting four resistors, each of 16 ohm in parallel with ammeter. अब मेरी बात बराबर समझना. I said here how to convert galvanometer into an ammeter by shunting it. अब एक ऑलरेडी एमीटर मेरे पास है, उसमें से भी दूसरा एमीटर बना सकता हूं मैं, और रेंज बढ़ाने के लिए आपको खाली शंट में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते जाना है. तो नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू हैव दिस क्वेश्चन, एक एमीटर है मेरे पास और उसके अक्रॉस मैंने कोई शंट कनेक्ट किया. समझा? एक में इनफैक्ट देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस, ईच ऑफ 16 ओम, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल. मतलब एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 4 है. ये टोटल 16 के 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन कम सर, ये एमीटर तो ऑलरेडी है, आप अभी क्या लिखोगे? अरे दूसरा एमीटर बना यार, नया वाला एमीटर बना. तो ये जो एमीटर ऑलरेडी है उसका रेजिस्टेंस, ओके, इफ आई टेक दैट रेजिस्टेंस इज नॉट जी बट जी डैश, तो ये जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, एंड इट इज गिविंग, लेट अस से IG नॉट IG डैश, इट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग 1 मिली एम्पियर. अब ये जो है ये पूरा वाला पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट इज योर शंट, लेट अस से S डैश. ये कैसे मिलेगा? 16 डिवाइड बाई 4, बिकॉज 4 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में ना, तो 16 डिवाइड बाई 4 भी कितना होता है? 4 ओम. ये मेरा नया वाला शंट मिला. सो फाइनली आई कैन से शंट इज इक्वल्स टू G अपॉन n माइनस 1 लिखते थे ना,
अब मैंने सब जगह पर डैश रखा है, तो फ्रॉम ईयर शंट का वैल्यू 4 है, दिस इज 20, n डैश माइनस 1, तो कहने से n डैश माइनस 1 इज 20 डिवाइड बाय 4 मतलब 5, सो n डैश मस्ट बी 6, मतलब मैंने 6 टाइम्स रेंज बढ़ा दी, तो पहले इट वाज कैपेबल ऑफ मेजरिंग व्हाट ओनली IG डैश, तो व्हाट इज n डैश, इट इज I डैश अपॉन IG डैश ना, ऐसा, तो I डैश मस्ट बी 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर क्यों, बिकॉज मैंने 6 टाइम्स रेंज को बढ़ाई, क्लियर, I said 6 times range को बढ़ाया, इसके लिए get this, okay, next question is, a galvanometer has resistance of 10 ohm and full scale deflection current of 5 milliampere. In order to convert it into voltmeter, reading up to 20 volt, the necessary series resistance required to be added. Samjha? So you have a galvanometer, okay, and I have to connect some resistance in series so that it is capable of measuring how much, 20 volt. But I hope you understand, जो current जाएगा वो तो IG रहेगा, और इसके अगर उसका जो ड्रॉप था वो VG था, तो मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, so it is N which is equal to V by VG. मुझे वो रेंज मिल गया, तो my resistance will be what, G into N minus 1. G मुझे पता है, but N निकालना पड़ेगा. But what is VG? VG is not given. So can I write this as IG into G? So now I want to measure 20 volt. मेरा IG का वैल्यू 5 मिली एम्पियर है, कैपिटल G 10 ओम है, समझा? So this will be what, 20 by 5, 4, and ये 10 raised to minus 2 बचेगा, तो when it goes up it becomes 10 raised to plus 2, मतलब 400, तो 400 minus 1 मतलब 399, so मेरा final answer will be 3990 ohm resistance, and that should be connected in what, series. So एक simple question लिया based on ammeter voltmeter, correct? Okay, next. I hope you can manage questions on B axis, B center. मतलब एक circular current carrying coil है, उसके center पे magnetic field कितना, and magnetic induction at some point along the axis कितना होगा. तो formula based questions you can expect. So that's not very difficult. I mean, आप manage कर सकते हो. For example, एक question है, two long thin wires ABC and DEF are arranged as shown. The magnitude
of magnetic field at O is, अभी आपको डायग्राम ना दिया है, this is the diagram given. एक अरेंजमेंट ऐसा है, एंड दूसरा अरेंजमेंट ऐसा है. दिस इज ए बी सी, जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, एंड द अदर वन इज डी ई एफ, इसमें करंट ऐसे जा रहा है. करंट सेम, एंड बाय द वे ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर, एंड ये जो डिस्टेंस है वो भी आर, एंड ये सेंटर ओ है वेयर आई एम सपोज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. अभी डू अंडरस्टैंड ए बी पार्ट, ए बी सी को भी मैं दो पार्ट में सोच सकता हूँ, ए बी एंड बी सी. तो ए बी के लिए इट इज अलोंग द लेंथ. फॉर एनी कंडक्टर विच इज कैरिंग करंट अलोंग द लेंथ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है. आई रिपीट, फॉर एनी कंडक्टर, राइट, ये कंडक्टर है ऐसा कैरिंग करंट, तो अलोंग द लेंथ आपने कोई भी पॉइंट लिया है, सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है. फील्ड इज ऑलवेज प्रोड्यूस अराउंड. तो ये ए बी सी पार्ट भले पूरा लिखा है कैरिंग करंट आई और ये 90 डिग्री पे बेंड है यहाँ पे, बट आई होप यू अंडरस्टैंड ए बी पार्ट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, बिकॉज पॉइंट ओ इज लाइंग वेयर अलोंग द लेंथ. तो खाली बीसी पार्ट की वजह से होगा. एंड इफ यू अंडरस्टैंड बीसी पार्ट के लिए, इफ यू अप्लाई मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, करंट डाउनवर्ड्स, राइट, तो आपका राइट हैंड का फिंगर राइट साइड में विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स. सिमिलरली इफ यू अंडरस्टैंड डीई पार्ट की वजह से, मतलब ड्यू टू current from AB and current from DE, there is no field. बट बाकी जो पार्ट है BC and EF, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐड होगा. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O मस्ट बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC पार्ट प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू EF पार्ट. ऐड क्यों होगा? Because of both the conductors, if you apply Maxwell's right hand thumb rule, my fingers will be pointing outwards. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एट सेंटर O इज सम ऑफ द टू फील्ड्स बिकॉज ऑफ दिस टू वायर्स. तो उसका यू ऑल कैन सी ये वाला जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, एक एंड फाइनाइट है. तो उसका इट बिकम्स टू टाइम्स ऑफ दिस, व्हाट वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई डी, डी इज बेसिकली आर, सॉरी, इंटू साइन 0 प्लस साइन 90. ओके, तो साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, तो बेसिकली आंसर क्या आएगा? इट्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 बाई आर. क्लियर? नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इज, the current element of length 0.05 meter carries 10 ampere current placed along x-axis at the origin. Then magnetic induction due to this element at 1 meter above it along y-axis will be.
जरा आप थोड़ा सा पिक्चर को विजुअलाइज करो बच्चा लोग. You are given x and y axis. Okay. मेरा एलिमेंट इधर रखा है मैंने along x axis such that maybe you can think as if एलिमेंट का जो सेंटर है वो करंट ओरिजिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है. It is carrying current in what direction? They are saying it is carrying current in this direction, 10 ampere. तो एक छोटा सा एलिमेंट हुआ which is carrying current like this, और मुझे ये पॉइंट पे which is 1 meter above it, I am supposed to find magnetic field. अभी नहीं, ये सब क्वेश्चंस में वो लोग डायरेक्शंस भी पूछ सकते हैं along with the magnitude. So I hope you understand this magnetic field at this particular point, it's not B, it's dB. तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ? Biot-Savart's law, which strictly gives magnetic field due to element, and that formula is mu naught upon 4 pi into IDL sin theta upon r square. So I hope you understand, ये वाला जो एंगल है वो 90 है. थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एलिमेंट and the line joining center of the element to the point where you want to find the field. तो मुझे ये पॉइंट P पे फील्ड चाहिए ना, तो ये लाइन परपेंडिकुलर है. तो दिस dB must be mu naught upon 4 pi. बाय द वे उसका वैल्यू कितना है? करंट 10 एम्पियर है, लेंथ कितना है? 0.05 मीटर लेंथ एलिमेंट का, मतलब 5 into 10⁻⁻² into sin 90 upon 1. So it is 5 into -2 plus 1 minus 1 and -7. तो इतना फील्ड होगा. And if you apply Maxwell's right hand thumb rule, आपकी thumb, right hand का thumb pointing towards right side, तो ऊपर की side fingers will be pointing outwards. So this magnetic field is pointing where? Outwards. If you reverse current का direction तो inwards होगा, या point ऊपर की जगह पे नीचे during in the negative y-axis लिया along, तो भी वो direction outward की जगह पे inward हो सकता है. Correct? Next. Question is, two equally charged particle when accelerated through same potential difference and enters into transverse magnetic field, then remember any charged particle अगर magnetic field में right angle enter करेगा तो it goes along circular path, along the circle जाता है, right? Circular trajectory, ये important है. Then they have said that it goes along circular path of radii R1 and R2, then ratio of their masses will be. Of course, question में मुझे एक ही relation चाहिए, but मैं सब बताता हूँ that any charged particle having its velocity perpendicular to magnetic field, it goes along what? Circular path. Circular path के लिए कौन सा force चाहिए? Centripetal, mv square by r. And here it is which force? QBB sin 90. इसके लिए QBB. So I get radius के what relations? R is equals to
mv by qb. mv is momentum by qb. Momentum is root 2 me, is the kinetic energy by qb, and kinetic energy is charge into potential difference upon qb. ये चार रिलेशंस मैंने रेडियस के लिखे. Now why did I write? Please look here. मैं बहुत कुछ एक ही टाइप क्वेश्चन में कवर हो जाएगा. अगर आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है और यू कैन बी गिवन मोमेंटम कांस्टेंट और आपको काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दे सकता है या आपको पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट दे सकता है. सो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है सब जगह पे, बी तो कांस्टेंट है ही, तो इन दैट केस माय रेडियस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन चार्ज. रेडियस के ही अलग अलग रिलेशंस यू गेट इट. अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो रेडियस मस्ट बी जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. फिर वो मास पर डिपेंड ही नहीं करेगा अगर मोमेंटम कांस्टेंट बोला तो. अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट टाइम अपॉन चार्ज. दोनों आएगा मास चार्ज, बट मास का रूट पावर है, स्क्वायर रूट है. एंड यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट बोला है तो इट्स रूट ऑफ एम क्यू बाई क्यू. क्यू को अंदर लेके जाओ तो इट इज एम बाई क्यू. तो ये चारों मुझे जो रिलेशन मिले रेडियस के, चारों अलग अलग है. बेस्ड ऑन विच क्वांटिटी इज कांस्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट चलो, अब मेरे क्वेश्चन में क्या क्या सेम है, कैन यू गाइस सी? इट्स गिवन दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज भी सेम है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो मैं सीधा पहले ये रिलेशन यूज करता हूं, दैट रेडियस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू रूट एम, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है. कैपिटल वी इज पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज भी सेम. तो उसका मतलब मास मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्क्वायर ऑफ द रेडियस. सो m1 by m2 मस्ट बी r1 by r2 का स्क्वायर. क्लियर है? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ एंड ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन हियर इज, एन aeroplane moving horizontally with 1800 kilometer per hour having wingspan of 2 meter. If magnitude of Earth's magnetic field is 5 into 10 raised to minus 4 Tesla and dip angle is 30 degree, then EMF induced across wing of plane will be. तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? E is equals to BLV sin theta. करेक्ट? अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लेन कैसे मूव करता है हॉरिजॉन्टली. अगर प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो इट मस्ट बी कटिंग द वर्टिकल कंपोनेंट, तो फिर ये एंगल 90 आएगा. तो दिस इज BV. VV मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज LV. बाय द वे, आई होप यू रिमेंबर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में से मुझे इतना ही चाहिए, BH BV, और ये जो होता है दैट इज द अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, and this is what I call it as dip angle. So I have two relations. BH is B cos delta and BV is what? B sin delta.
आपको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए और डिप एंगल भी दिया है, तो आई यूज बी साइन डेल्टा एल वी, राइट? तो दिस इज ये डेल्टा डिप एंगल, दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴, डेल्टा 30 है, साइन 30 हाफ, लेंथ मुझे 2 मीटर दिया है, एंड वेलोसिटी बच्चा लोग 1800 किलोमीटर पर आवर, तो इंटू 5/18, राइट ना? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो विद दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट, करेक्ट? आगे they do ask questions on Faraday's law. So the type is what? E is equals to d phi by dt, जिसमें मेनली 3 टाइप्स है. इफ एरिया चेंज नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो dB by dt. इट कुड ऑल्सो बी डेल्टा B by T. dB by dt मतलब कुछ इक्वेशन दी और आपको डिफरेंशिएट करना, और अगर इक्वेशन नहीं दिया है, कुछ फाइनाइट चेंज हो रहा है कि इन गिवन टाइम, तो आई राइट इट एज डेल्टा B by T. Likewise, this E could be equal to B into dA by dt, or else it can also be equal to B into delta A by T. तो ये दोनों में मेरा असम्पशन है कि या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या एरिया चेंज हो रहा है. बट मान लो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कॉइल का एंगल चेंज हो रहा है, तो इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2. या ऑफकोर्स बाय द वे यू नो ये जो है माइनस साइन होता है ना विद द लेंस लो, माइनस डी फाई बाई डी टी, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड में लिखा है. बट सो व्हेन आई राइट एंगल चेंज होना, तो इट शुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर ना? तो θ2 पहले आना चाहिए, बट देयर इज अ माइनस साइन अहेड हियर, इसलिए इट बिकम्स कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2. सो ये 3 एक्सप्रेशंस है बेस्ड ऑन विच यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस. मैं अभी ले नहीं रहा हूँ, बट बिकॉज सब में सिंपल सिंपल फॉर्मूला देके टाइप दिया रहेगा. बट जहां पे भी चेंज आता है, डेल्टा बी है या डेल्टा ए है, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. इट इज चेंजिंग बाय और चेंजेस टू, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नहीं तो फिर उसमें गड़बड़ होता है. आगे ट्रांसफॉर्मर इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इज a transformer converts 220 वोल्ट AC, कुछ नहीं बोला तो AC मतलब RMS ही होता है, to 3.3 kilovolt and transmits at 4.4 किलोवाट. देखा, किलो वोल्ट बोला पहले और किलो वॉट बोला बाद में. देन फाइंड करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. समझा? मैंने यहाँ पे आई डिड नॉट गिव यू द नंबर ऑफ टर्न्स, बट आप जरा समझने की ट्राई करो. 220 वोल्ट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 3.3 किलो वोल्ट, मतलब कि सेम है सेइंग 3300 वोल्ट, बराबर ना? तो ट्रांसफॉर्मर का टाइप क्या हो गया? इट मस्ट बी स्टेप अप. अब मेरा जो आउटपुट पावर है, आउटपुट मतलब व्हाट? ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट क्या होता है? सेकेंडरी. और इनपुट क्या होता है? प्राइमरी, है ना? सो मेरा जो आउटपुट पावर है, सेकेंडरी पावर, दैट इज 4.4 किलोवाट, मतलब 4400. बट इज इट नथिंग बट ES इंटू IS. और वही मेरा सेकेंडरी का वोल्टेज कितना था? 3300, है ना? 3.3.
So I get current. It is 44/33 मतलब 4/3 एम्पियर. समझा? और एक ही फॉर्मूला है जो मुझे कवर करना था, वही NP/NS is EP/ES into IS/IP. करंट में उल्टा होता है. अभी यहाँ पे ये करंट नंबर ऑफ टर्न्स तो मुझे दिए ही नहीं है, बट प्राइमरी वोल्टेज इज 220. दिस इज 3300. I got the current on primary secondary side, that is 4/3. तो यहां से मुझे प्राइमरी करंट मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट. In series LCR circuit, if VL, I'm sorry, if R is equals to 120 ohm, XL is 40 ohm, XC is 40 ohm, then voltage drop across inductor will be AC source of 200 volt. एक मिनट. AC source of 60 volt is connected to circuit. So मेरा सर्किट में रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सब कुछ है. RLC. This is 60 volt का source. Can you guys see it is XL is equal to XC है? What is that XL is equal to XC condition called? Resonance. तो रेजोनेंस में इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है? R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर ना. तो Z रेजोनेंस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? मिनिमम, विच इज 120. तो सर्किट में कितना करंट जा रहा है? इट इज V/Z, but Z minimum is R. So it is 60 divided by 120, मतलब half ampere. समझा? Now question is, I want to calculate what is the voltage drop across inductor. So you stick to basics. Voltage drop across inductor VL must be what? I into XL. है ना? करंट मुझे हाफ मिला और एक्सेल तो क्वेश्चन में ही बोला ऑलरेडी, इट्स 40 ओम. तो इधर कितना ड्रॉप मिलेगा? 20 वोल्ट. समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the photon of energy E is incident on metal surface with work function phi naught. If electron emitted from metal due to this enters into
uniform transverse magnetic field, then radius of circular path will be. Let's try to understand दो concepts को merge किया है. एक में बोला है when the photon is incident on the metal surface वहां से electron eject हुआ, मतलब this is a question on what? Photoelectric effect. अब जो इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ और इजेक्ट हुआ, सॉरी, इट एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो चार्ज पार्टिकल है, एंड व्हेन इट एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब इट विल गो अलोंग सर्कुलर पाथ. तो सर्कुलर पाथ का रेडियस मुझे निकालना है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया, पहले बाय photoelectric effect, kinetic energy Ke max is energy minus work function. आई एम सॉरी बट वो वर्क फंक्शन क्वेश्चन में 5 नोट दिया ना, करेक्ट. This kinetic energy from here will be half mv square. So from here v square will be 2 into e minus phi naught, this whole divided by m. तो मुझे speed मिल गया, it is root of this. आप मुझे बोला है कि वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, मतलब परपेंडिकुलर, तो रेडियस must be given by what? mv by qb, है ना. So it is m by qb, and ये पूरा स्पीड का एक्सप्रेशन मुझे क्या मिला? 2 into e minus phi naught upon m. तो आप एक m को अंदर लेके जाओ, and by the way q is e because electron है, तो it is 1 upon eb into root of 2 m square होगा, एक m cancel होगा, तो you get it this. Clear? यार ये चैप्टर ड्यूअल नेचर में बहुत सारे ग्राफ थे, so all those graphs should be studied properly. और अच्छे से कर लेना बिल्डर. नेक्स्ट, an electron and a proton, an electron and proton are accelerated through same potential difference, then ratio of their de Broglie wavelength will be. ठीक है, तो वंस अगेन हिंट क्या है? दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. तो मेरा ये दो कीवर्ड है, सेम पीडी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो चाहिए. सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय h by p, which is very same h by root 2me, and this is nothing but 2m q capital V, where capital V stands for potential difference. Of course इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही होगा, बट मासेस अलग है. So can I say wavelength must be inversely proportional to root of m? Charge same है, potential difference same है, right? So de Broglie wavelength of their wavelength will be. तो क्वेश्चन में अगर पहले इलेक्ट्रॉन दिया है तो आप बाय डिफॉल्ट वही सब फाइंड करने का रिस्पेक्टिवली. तो इट इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी मास ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो रेशियो में गड़बड़ होता है कभी कभी, है ना, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट, तो थोड़ा सा यू टू बी केयरफुल.
right? Next. Question is, an electron in ground state of hydrogen atom is excited to higher energy state where velocity becomes 1/5. Then the radius of that energy level, I'm sorry, of that orbit if R is the radius in ground state orbit. Because of थोड़ा सा टाइम कम, इसलिए मैं I tried की दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को क्लब किया. क्लियर? सी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऑर्बिट का रेडियस आर है. Then they are saying that it is being excited to some higher energy level. समझो ये एनर्जी लेवल पे आया, वो मुझे नहीं पता, बट वो एनर्जी लेवल पे क्या हो रहा है, समझो यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो इधर का वेलोसिटी कितना हो गया, v/5, और उसका रेडियस चाहिए, लेट अस से r डैश. अब समझा? अब हाउ इज वेलोसिटी रिलेटेड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनवर्सली? सो अगर मुझे बोल रहा है कि v डैश इज v/5, मतलब कि n मस्ट बी 5 ना, बट अभी फिफ्थ एनर्जी लेवल पे एक्साइट हुआ है. And at the same time, I know that the radius is proportional to n square. So r dash by r must be 5 ka square means 25. So it must be 25 times the original ground state की जो radius r दी है. Alright? Okay. Next. यार logic gates and diode वाले questions are very very important. So without fail, you please revise truth table of all the logic gates. Because अगर आपको truth table आएगा, तभी you can easily understand ना. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? If you understand truth table, तो ही आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो प्लीज रिवाइज ट्रूथ टेबल वेरी प्रॉपरली. एक सिंपल क्वेश्चन है, गेट्स को सही से आइडेंटिफाई करना. सो दिस इज एक्स एंड वाई. इसका और इसका जो आउटपुट है, वो वाई है इधर. फाइनली आई एम सॉरी. दिस इज वाई. थिंक दिस इज ए एंड दिस इज बी. आपको गेट आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले ये कौन सा गेट है? दिस इज सिंपली और गेट. दिस इज विच गेट? नैंड गेट. और ये कौन सा गेट है? नॉर गेट. ऑब्वियसली ये नॉट गेट है.
क्वेश्चन टू यू इज इफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, तो मेरा आउटपुट क्या होगा? राइट, सो गो वन बाय वन. अगर a 1 है तो उसका नॉट क्या, तो यहाँ पे 0 होगा, एंड ये सीधा 1 ही जा रहा है. अभी 0 एंड 1 और गेट में कोई भी इनपुट एक अगर हाई है तो आउटपुट विल बी हाई. अच्छा भाई दी भाई ये 1 है और अभी बी 1 का 0 हो गया. नैंड गेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? आई मीन कोई भी एक इनपुट सॉरी 0 है तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? 1. नैंड में याद करो 0 0 0 1 1 0 सबके लिए 1 1 1 मिलेगा, लास्ट में 1 1 के लिए 0 मिलेगा. अभी नॉर गेट है, नॉर गेट में भी वही होता है. नॉर गेट में ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई आउटपुट विल बी 0, राइट? सॉरी, ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो आउटपुट विल बी हाई. बाकी सब जगह पे मेरा आउटपुट 0 रहेगा. सो योर आउटपुट विल बी व्हाट? 0. तो फॉर दिस बुलियन अलजेब्रा वाला पार्ट जो है शुड बी वेरी क्लियर. बुलियन अलजेब्रा मतलब मैं बोल रहा हूँ कि और ट्रूथ टेबल के साथ आपको 0 + 1, मतलब मैं खाली सिंपल थोड़े रूल्स लिख देता हूँ. इफ a is any input तो a + 1 will always be 1. a into 1 is always a, जो भी a रहेगा, मतलब 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1, like this. Similarly, a + 0 is always a, but a dot 0 is always 0. And a plus a bar and a dot a bar, this is always 0, this is always 1. समझो a 0 है तो दूसरा 1 होगा ना, 0 + 1 तो 1 ही होता है, like that. But complement करेंगे तो 0 होगा. This I was talking about will help you for solving certain questions. लॉजिक गेट्स के ऊपर सारे PYQs अच्छे से सॉल्व कर लो, बहुत सारे नीट के पेपर में आए हैं, तो दिस विल ऑलवेज हेल्प यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज व्हाट इज VPQ हियर? तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. डायोड का ये P टाइप N टाइप होता है ना, तो ये वाला जो डायोड है, डायोड D1 इज फॉरवर्ड बाइस्ड, जबकि ये वाला डायोड जो है वो कैसा है? रिवर्स बाइस्ड. तो इसका मेरा इक्विवेलेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस. ये वाला पार्ट ओपन ही हो गया ना डायोड, तो फ्रेंकली स्पीकिंग सबसे सिंप्लीफाइड डायग्राम इज दिस. इधर PQ है विच इज 10 ओम, इधर 20 ओम है, और ये 30 वोल्ट का सेल है. तो हाउ विल आई गेट VPQ? इट इज सम फ्रैक्शन ऑफ टोटल. जब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सीधा सीधा वही रेजिस्टेंस लेने का, मतलब PQ के अक्रॉस कौन सा रेजिस्टेंस है? 10/20 + 10. So this is 10/30 into 30. This gets cancelled, you get 10 volt. Clear? Next question is, a convex lens, for a convex lens having focal length f, for a convex lens having focal length f, if the distance between if the distance between
object and image is 0.72 for magnification of 2. If object is moved towards lens by 0.02 meter, then linear magnification becomes. तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाएगा. सी यू हैव अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बोला है. कॉन्वेक्स लेंस के रेफरेंस में ऑब्जेक्ट एंड आई एम सो सॉरी, ये रियल देना जरूरी है, तो यू अंडरस्टैंड ना पोजीशन. ये मेरी इमेज है, रियल इमेज इज ऑन द अदर साइड ना. ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यू, और ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी. तो मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 0.72, मतलब u प्लस v इज 0.72. समझा. मैग्निफिकेशन क्या दिया है मुझे, 2, मींस v अपॉन u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका मैग्निफिकेशन होता है. सो फ्रॉम हियर आई गेट v इज इक्वल टू 2u. तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं. तो 2u प्लस u विल बी 3u which is 0.72, मतलब u must be 0.72 अपॉन 3 मतलब 0.24, और v उसका डबल है तो इट मस्ट बी 0.48. तो ये फर्स्ट कंडीशन से आपको ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस मिला, समझ में आया. एंड आई नो दैट 1 अपॉन फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा, मस्ट बी 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, बट दिस इज नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ये 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u होगा. अब मुझे क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स द लेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टुवर्ड्स. तो जो ये लेंस अगर, अरे ऑब्जेक्ट अगर लेंस की साइड में जा रहा है, तो जो नया वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा मस्ट बी u माइनस 0.02 ना. ये कितना था, 0.24, माइनस 0.04 ले लो, 0.04 ले लो, जरा इजी हो जाएगा. इट बिकम्स व्हाट, 0.2. ये नया वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला. सो कैन आई से 1 अपॉन f मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन v डैश प्लस 1 अपॉन u डैश. अब ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, उसमें लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है ना, 1 अपॉन f. समझा. तो कैन आई इक्वेट द राइट हैंड साइड्स, मतलब 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन v डैश प्लस 1 अपॉन u डैश. अब आपको v पता है, u पता है, u डैश पता है, तो यहां से v डैश मिलेगा. सो नया वाला मैग्निफिकेशन कैसे मिलेगा, v डैश बाई यू डैश. ये कितना मिला था, 0.2. समझे बच्चा लोग. यू विल गेट v डैश फ्रॉम हियर, एंड v डैश के बाद नया वाला मैग्निफिकेशन यू गेट फ्रॉम हियर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so for a spherical mirror, the correct graph of 1 by v versus 1 by u, where f is negative and
V and U are also negative. ऐसा कौन सा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है? तो इट्स कॉनकेव. और ऐसा क्या कंडीशन है फॉर विच इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा? इमेज डिस्टेंस नेगेटिव मतलब वो इमेज कैसी होगी? रियल इमेज. तो ये क्वेश्चन कॉनकेव मिरर रियल इमेज के लिए है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, ये मेरा कॉनकेव मिरर अगर है, इधर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इधर मुझे इमेज, सॉरी, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इधर मुझे इमेज मिली. सो दिस डिस्टेंस आई कॉल इट एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस. सो मेरा फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होगा? 1/f is equals to 1/v प्लस 1/u. हेलो, मिरर इक्वेशन है. अब इसमें फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है. तो ऑब्वियसली इन दैट केस सब नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा ना ये. आई मीन इक्वेशन वापस टर्न बैक करके यही हो जाएगा. अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करता हूँ 1/v वर्सेस 1/u, तो विल इट बिकम लाइक दिस? खाली 1/u को शिफ्ट किया मैंने. अब आई सेड ग्राफ इज 1/v वर्सेस 1/u, मतलब इधर 1/v है और इधर 1/u है. समझा? सो इन दैट केस ये मेरा y पैरामीटर है माइनस ये मेरा x पैरामीटर है प्लस c. तो इज इट लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c? समझो, ये मेरा y पैरामीटर है, ये मेरा x पैरामीटर है. जनरली ये जो होता है हम लोग उसको m बोलते हैं. तो यहाँ पे स्लोप क्या है? नेगेटिव. एंड y इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव. स्लोप नेगेटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा. स्ट्रेट लाइन है फॉर श्योर, बिकॉज इट इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू mx प्लस c. पर वो स्ट्रेट लाइन में दो पॉसिबिलिटी है. स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है या y इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है. तो अकॉर्डिंगली इट्स दिस, राइट? मैं ये क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, बट आई होप यू रिमेंबर थिन प्रिज्म. उसके लिए फॉर्मूला फॉर डेल्टा इज a इंटू म्यू माइनस 1. एंगल ऑफ डेविएशन, ये थिन प्रिज्म है. क्या होता है थिन प्रिज्म? फॉर विच एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 10 डिग्री. ये so when a ray of light is incident, it will undergo deviation. इसको भी call it as deviation. And but thin prism के केस में delta minimum is nearly same as delta. उसके लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ. अदरवाइज प्रिज्म में एक ही फॉर्मूला है, प्रिज्म फॉर्मूला, which is mu is equal to sine of a plus delta m by 2 upon sine of a by 2. This is prism formula. But कब यूज करना है? only when the deviation is given as minimum, not otherwise. ठीक है? Next question is, in Young's double slit experiment, slits are 0.5 mm apart and interference pattern is observed on screen 100 centimeter from slits. If wavelength of 6000 angstrom is used, then
separation between third bright fringe and central maxima is. ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है और ये मेरा थर्ड ब्राइट फ्रिंज है. These are my two slits. कुछ याद आ रहा है पिक्चर? इसको यू कॉल्ड एज स्मॉल डी स्लिट सेपरेशन, इसको यू कॉल्ड एज कैपिटल डी. ये डिस्टेंस मुझे पूछा है. तो ब्राइट बैंड के लिए इट इज n टाइम्स लैम्ब बड़ा d बाई डी, और डार्क बैंड के लिए इट इज xm डैश विच इज m माइनस हाफ टाइम्स लैम्ब बड़ा d बाई डी. ये ब्राइट बैंड का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, और ये डार्क बैंड का डिस्टेंस है. मुझे तो क्वेश्चन में थर्ड ब्राइट पूछा है, तो इट इज सिंपली 3 टाइम्स लैम्ब बड़ा d बाई डी. बाकी आपको सब कुछ दिया हुआ है, लैम्बडा कैपिटल डी स्मॉल डी की. क्लियर? बच्चा लोग YDAC करो अच्छे से. ऑलराइट. एंड पोलराइजेशन में यू मेनली डू, दो ही रिलेशन है पूरे पोलराइजेशन में. एक मेलिस लॉ है विच इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 10 ऑफ IP, वेर IP इज द पोलराइजिंग एंगल, एंड अदरवाइज इट इज I is equals to I naught by 2 into cos square phi. मतलब अगर ये एक पोलराइजर है, राइट, और ये दूसरा पोलराइजर है, ओके, उसके बीच में एंगल फाई है. वॉट एवर इज द लाइट की इंटेंसिटी ओवर हियर, पहले तो हमेशा हाफ होता है, एंड ये जो आई मैंने लिखा है वो दूसरे के आउटपुट पे. तो हाउ आर दिस थ्री इंटेंसिटीज रिलेटेड, वो यहाँ पे. करेक्ट? सो in this limited time, mostly all types I have tried to cover. तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना, ओके, एंड go through it once. So all the very best and God bless you all. We will stop here. Okay. Thank you. Bye.